Hello everyone, welcome to Learn Modern English channel where you will learn modern English in Hindi. So without wasting any time, let's start the video. So guys, nowadays there is a two type of English. First is bookish English and the second is modern English. So guys, जो इंग्लिश हम किताबों में पढ़ते हैं, जो कि ग्रामर रूल्स को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, उसे इंग्लिश बुकिश इंग्लिश कहते हैं. एंड गाइस मॉडर्न इंग्लिश आपको किताबों में देखने को बहुत कम मिलेगी बिकॉज इसमें ग्रामर रूल्स का बहुत ही कम यूज होता है और इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं मॉडर्न इंग्लिश बोलना और ये इंप्रेसिव भी होती है और इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज में. फर्स्ट सेंटेंस इज मैं घर जा रहा हूं. आई एम हेडिंग टू होम, जो कि एक मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस है. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, आई एम गोइंग टू होम. और ये एक बुकिश इंग्लिश का सेंटेंस है जहां गोइंग टू और हेडिंग टू का मतलब सेम है. एंड द सेकेंड सेंटेंस इज हम सभी दोस्तों की कल एक मुलाकात है. वी ऑल फ्रेंड्स हैव अ rendezvous tomorrow. And you can also say this sentence like this, we all friends have a meeting tomorrow. जहां मीटिंग और रोंडेवू का मतलब सेम है. रोंडेवू एक मॉडर्न इंग्लिश का वर्ड है. तो द थर्ड सेंटेंस इज वह स्नान करने जा रही है. शी इज गोना हैव शावर. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, शी इज गोइंग टू टेक बाथ. गाइज गोना इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोइंग प्लस टू. एंड द फोर्थ सेंटेंस इज वह खाना खा रहा है. ही इज हैविंग फूड. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक ही इज ईटिंग फूड. एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज आज थोड़ी बहुत ठंड है. देर इज अ निप इन द एयर टूडे. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, इट्स अ बिट कोल्ड टूडे. एंड द सिक्स्थ सेंटेंस इज क्या मैं आपकी कलम का कुछ समय के लिए उपयोग कर सकता हूं. कुड आई यूटिलाइज योर पेन momentarily. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, कुड आई यूज योर पेन फॉर सम टाइम. एंड गाइस momentarily का मतलब होता है कुछ समय के लिए. एंड द सेवंथ सेंटेंस इज मैं सोने जा रहा हूं. आई एम गोइंग टू हिट द सैक. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, आई एम गोइंग टू स्लीप. गाइस हिट द सैक इज एन इडियम इन इंग्लिश. एंड गाइस एट्थ सेंटेंस इज हमें एक नए कंप्यूटर की जरूरत है. वी आर रिक्वायर्ड अ नोवेल कंप्यूटर. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, वी नीड अ न्यू कंप्यूटर. एंड द नाइन्थ सेंटेंस इज मैं टीवी देख रहा हूं. आई एम वॉचिंग स्टूपिड बॉक्स. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, आई एम वॉचिंग टीवी. गाइस स्टूपिड बॉक्स एक स्लैंग वर्ड है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है टेलीविजन. एंड द लास्ट सेंटेंस बट नॉट लीस्ट, छत का पंखा काम नहीं कर रहा है. सीलिंग फैन इज डिफंक्ट. एंड यू कैन ऑल्सो मेक दिस सेंटेंस, सीलिंग फैन इज नॉट वर्किंग वेल. I hope guys you liked this video, and this is a new dedicated channel for learning modern English. And if you have any doubt regarding this video, you can comment below and we will answer you in short time. And make sure to subscribe this channel and press the bell icon to get more videos like this. Thanks for watching and have a wonderful day.